So we have question number 9.4, and in this question we have to ask that what is the refractive index of this first of all the glass and water relative refractive index concept is asked, and second thing is the angle, that is refracted angle, that what is the refracting angle, or what is not exact but what is the approx refractive angle that you're going to get in this particular condition, right? So first of all, let's revise this concept a little bit so that it will always going to help in the exam for you guys remembering the concept. So this concept is generally asked from refraction of light, that is Snell's law is the main concept here, right? And with that also mu is equal to speed of light by speed of vacuum in medium C by CB. So you can also revise all these concepts, that is very important related to ray optics chapter, right? So you can pause and revise, and let's start the course solving the question that we have agenda of this today's video. So first of all, what is there is there are three systems that is given to us: glass, air, water, and then glass water, right? So we have to, what we have to do is the basic thing is we have to apply Snell's law, the Snell's law all over this systems again and again. And as in Snell's law we got mu glass by mu air, and in this in section we can get mu air by mu water, that means mu water by mu air. And if you could divide that, you will going to get mu glass by mu water, right? That is going to help in this condition. So this is this, why this way it is going to help in solving the question. Let's see how I have approached this and how you can also write this in your exam, right? So simple. First of all, you have to write question number 1.4. Given that is in figure A, angle of incident in air is 60, angle of refraction in air glass is 35, then angle of incident of air is 60, angle of refracted water is 45, then आपका angle of incident water is 45 and angle of refraction of glass is, you have to find, right? This is the thing. Now comparing refractive index using Snell's law, that is the concept used here. Mu I sin I is equal to mu r sin r, right? Simple. And that mu I sin r is, mu I is your mu air, that is refractive index of air, or sin I means this incident angle that is here, and mu r is your glass where refraction is happening, and that is r, that is the refracted angle. It got bent in the towards the normal because that means glass is more denser, refractive density is more, right? So applying Snell's law for air and glass system, you can see from air and glass system, what is it? It is mu g sin 35 is equal to mu air sin 60. You have to find mu g by mu air. That is the main plan here. So you will find mu g by mu air, then mu water by mu air, and you will divide, you will get mu g by mu water. That what you have to keep in mind to do, right? So then air water system, so mu water by mu air, that is sin 60 by sin 47, and after dividing this you will going to get mu g by mu water, sin 45 by 47 by sin 35. And that is our plan, that is the thing that we want to get from where we are going to deduce the data that I need, right? So sin 47 is greater than sin 35. सिंपल. अब यहाँ पे आप अगर करना देखो तो आप जब कंपेयर करो इस रेशियो को तो आपको पता चलेगा म्यू जी ग्रेटर है म्यू वाटर से, राइट? सिंपल. अब आपको सिंपल एक बार ये पता चल गया आपको कि म्यू जी है, जो म्यू आपका ग्लास है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन है ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगा ये रे, और ये ज़रूरी है क्योंकि डेविएट होगा ये और ये इससे कम होगा इस इंसिडेंट रे से, तो इसका मतलब है कि आई जो आपका होने वाला है वो लेस देन 45 होने जा रहा है. तो आपका अपर लिमिट आपका आई का मिल गया कि वो तो कम होगा 45 से, इस केस से, ये जानने से. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है
कि once you know that G is denser than water, that means that ray will bend toward normal and less than the incident angle I, that is R less than 45 degree, right? अब आपका मिनिमम क्या होगा? तो मिनिमम आप देखो, आप एयर और ग्लास के केस में देखो तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है एयर से, राइट? और क्योंकि ये 60 डिग्री पे किया है इंसिडेंट, तो ये 35 डिग्री तक आपका यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गया है, राइट? और यहाँ पर ये 45 डिग्री तक किया है, तो यहाँ पर बस यही चांस है कि ये 45 से कम हो, राइट? सो ये आपका सिंपल केस है। अब इसका मतलब क्या है कि ग्लास तो आपका एयर तो ग्लास इससे भी ज़्यादा, आपका ग्लास से बहुत ज़्यादा इसका कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन वाटर का एयर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर बनेगा, रिफ्रैक्टिव एंगल, वो यहाँ से तो कम बनेगा, यहाँ से तो यहाँ पे कम बनेगा, 35 से कम बनेगा, क्योंकि ग्लास के कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में ग्लास थोड़ा डेंसर है, बट एयर से ज़्यादा, एयर ग्लास कंपेरिजन में वाटर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, राइट? तो आपका 35 के करीब तो आपका ये डेविएट नहीं करेगा, उससे कम ही करेगा, इतना तो पक्का है। तो हमें अपना मिनिमा भी मिल गया यहाँ पे। एज इन एयर ग्लास सिस्टम I60 and the bending is 35 refracting angle, and you know mu A refractive angle index of A is less than mu water and is less than mu glass. That means कि R is going to be greater than 35 डिग्री, राइट? तो आपका यहाँ पे जो R बनेगा एयर वाटर सिस्टम में, ये आपका 45 पे इंसिडेंट हो रहा है, ग्लास वाटर सिस्टम में, तो आपका ये या तो 35 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आपका बनेगा, 35 और 45 के बीच में ही आपका यहाँ पे कुछ बनेगा, राइट? सो ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन से, राइट? सिंपल, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा आपको केयरफुली एनालिटिकली इसको देखना होगा क्वेश्चन को, और आप इसे बना सकते हैं। ओके।